मैं काफ़ी टाइम से YouTube पर हूँ and I have created 62 videos and 48 shorts. All these years I have developed my filmmaking skills and improved my art style. But अब मैं कुछ different करना चाहता था. So I was thinking, brainstorming and researching for a couple of days. Then I saw this video uploaded by UltraInstinctart. This was it. Recently उसने 100k subs complete किए हैं and I also want 100k subscribers. By the way, congratulations. So in this video, I'm gonna draw an artwork just like UltraInstinctart. UltraInstinctart के काफ़ी सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे ये पता चला कि वो मोस्टली वेरी चीप आर्ट सप्लाईज का यूज़ करता है, like colored pencils and brush pens. So I decided to use pencil colors, brush pens and a basic ugly pencil. Sketching is all freehand cause I am no beginner. After drawing eyes, battle marks, here, my sketch was done. And I'm happy with the result. Check this out. And obviously it was time to do the line art. मैं thin और thick lines दोनों draw कर रहा हूँ to add more depth. Now I will use brush pens for extra elements. Erasing the marks and line art is over. ओके, कलरिंग थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है कॉज मैं हमेशा सिंगल मटेरियल से पूरा कलर करता हूँ, बट इस बार मैं अलग अलग मटेरियल्स का यूज करूंगा एंड आई विल स्टार्ट विद कलर्ड पेंसिल्स. तो सबसे पहले मैं डार्केस्ट हाईलाइट को कवर करूंगा. अब बीच में थोड़े कम डार्क वैल्यूज दूंगा यूजिंग दिस शेड ऑफ पिंक. Oh, can we take a minute, turn and face the critics? Let's put flowers in our hair like we don't care. And now the lightest pink and filling all the hair. Our groove, oh, that's good. It's just you and me, and making me laugh with your moves. Ain't no stopping our groove, oh, that's good. अब मैं स्किन टोन ब्रश पेन यूज करूंगा फॉर डार्क वैल्यूज. अब पेंसिल कलर से सबको फिल अप. अब इस शेड से ब्रश पेन वाले एरिया पे कलर करूंगा जिससे एक ग्लो सा शेड आएगा. नाउ ग्रे फॉर द आउटफिट. अब मैं इस शेड का अल्कोहल मार्कर यूज कर रहा हूँ कॉज दूसरे कलर्स में ये शेड नहीं था मेरे पास. नाउ द बैकग्राउंड लेफ्ट. तो मैं यूज करूंगा डिफरेंट शेड्स ऑफ पिंक. इसको रैंडमली ही कर रहा हूँ. Now white pencil से इलेक्ट्रिसिटी पर एक ग्लो इफेक्ट दूंगा. And finally it's done. Enjoy.